Hello student, if you are preparing for mains examination and practice is for specific relief act 1963, the question comes to into our mind कि कौन से वो questions हैं जो हमें अपनी top priority पे रखने हैं for practice in the mains answer writing, and there are some questions कि आप उनको avoid कर भी सकते हो. So in this video I am going to discuss with you all of these 10 important questions which has been usually asked in various competitive examination for mains. Now when we talk about 10 important questions in SRA, please remember the first question which comes into notion is from the preliminary part. So as you know that SRA is having three parts, first part, second and third. In first part there is one question which usually comes कि what do you understand by specific relief act, means to say पहले तो आपको यही बताना है, आपको एक अच्छा कंटेंट इसमें लिखना है कि specific relief होता क्या है, what is the meaning of it, and the very important thing is whether it is enforced for the criminal law or not. The question is from section 4. Please remember this is the question which is very important for you if you are going to start writing for mains. The question is whether SRA applies to the criminal law or not. So this is the first question that you should start with. Now when we talk about the second question, which is very important, as you always remember, that is from section 5 and 6. Section 5 and 6 always to have taken the top priority, reason being कि कॉन्सेप्ट वहां से पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जस्टिस डिमांड ये करता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो इज हैविंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी उसको आप डिस्पोजेस नाम करो विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन करो हाउ रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ इज हेल्पफुल for this purpose. Means to say if any person is in the possession of any immovable property or the movable property and other person deprive him from that property, तो SRA आपको कैसे help करता है. So you can try to understand that section 5 and section 6 both are important in that regard, right? तो जैसे मैंने आपको बोला कि section 5 और 6 से ये question बनता है, तो another question which usually comes in the DGS and Haryana, that problem based question in SRA. So we will have to draft some question which are usually based on section 5 and section 6 and then try to solve this question. Reason being कि यहाँ पर आपके problem based question again and again पूछे जाते हैं कि tenant और land owner के बीच dispute हो गया, land owner disposes from the property, whether the tenant is entitled to get the recovery of property or not. Means to say आपको ये भी question ध्यान देना पड़ेगा कि section 5 और 6 से problem based question भी आप करके चलो. Another very important question that needs to be in your top priority under SRA is what is the difference between section 5 and section 6 of SRA. तो ये तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, आपको इस पे एक अच्छा कंटेंट बनाना पड़ता है. That both of the section are talking about the recovery of immovable property. When both are talking about the recovery of immovable property, then what is the difference? So you will have to make this question also. Now एक अलग ट्रेंड चला है कुछ टाइम से आफ्टर 2013 एंड 14 दैट सेक्शन 9 जनरली नहीं पूछा जाता था, बट प्लीज रिमेंबर अभी आपका ये जो सेक्शन 9 है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है. सो यू विल आल्सो हैव टू मेक अ गुड आंसर व्हेन यू आर राइटिंग फॉर मेंस अंडर सेक्शन 9. मीन्स टू से what kind of defenses for the defendant are available when the plaintiff has filed a suit for specific performance of a contract. अगर plaintiff specific performance of contract को लेकर सूट फाइल करता है तो डिफेंडेंट के पास कौन से वो डिफेंसेस हैं जो अवेलेबल रहते हैं. तो यू शुड गो थ्रू सेक्शन 9. वो एक दो लाइनों का सेक्शन है, बट यू विल हैव टू कवर ऑल द रेलिवेंट सेक्शंस फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच डिक्लेयर्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल, राइट. तो वो आप इसको ले सकते हो. अनदर क्वेश्चन विच इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेज अबाउट what are the circumstances when you can be granted specific performance and what are the circumstances when you will be refused to be granted specific performance. तो सेक्शन 10 पे क्वेश्चन यूजुअली बनता ही बनता है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर रहे हो, अगर आप क्लेम करते हो तो फिर आप कैसे क्लेम करोगे, क्या इसेंशियल्स हैं उसके. प्लीज रिमेंबर pre-2018 and post-2018, there's a difference. When we talk about pre-2018 amendment in SRA, then the situation was different. Now SRA has been amended, so the remarkable changes has been done under section 10 of SRA. So now question is asked कि what are the circumstances when the court will grant you a specific relief. Another question which is attached with this that when the court will refuse, इट्स मीन टू से अगर आप सेक्शन 10 पे एक मेंस का क्वेश्चन बना रहे हो, सो प्लीज रिमेंबर दैट यू शुड गो थ्रू सेक्शन 11 क्लॉज 2
14 एंड 16। तो आपका एक बेटर आंसर अगर आपको लिखना है तो यू शुड मेक अ गुड आंसर बाय टेकिंग ऑल दीज सेक्शंस टुगेदर and then conclude that these are the circumstances when the court can refuse the remedy of specific performance। तो ये क्वेश्चन भी आपके टॉप प्रायोरिटी पे रहना चाहिए कि अगर आप एसआरए मेंस के क्वेश्चंस लिख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका टॉप प्रायोरिटी पे रहे कि कौन से वो सर्कमस्टांसेस होंगे जब कोर्ट आपको स्पेसिफिक रिलीफ देगा और कौन से वो सर्कमस्टांसेस होंगे जब कोर्ट आपको रिफ्यूज कर देगा। नाउ another question which is asked under SRA is from section 16 clause C also, because it talks about कि readiness and willingness to perform the contract। It means to say आप एक क्वेश्चन बनाओगे जो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एग्जाम में कि whenever you are going to bring a suit against the defendant for a specific performance of contract, then obviously defendant will try to get the defense. And what kind of defense defendant will take? Defendant will take the defense that the plaintiff was himself in default, and when he is saying that the plaintiff is in himself in default, तो plaintiff को बोलना पड़ता है कि I have always been ready and willing to perform the contract। means to say या तो मैंने already contract perform कर दिया है, then there is no problem from my side, या फिर there is another situation that even though I have not performed the contract from my side, but still I have always been ready and willing to perform the contract from my side। तो प्लीज रिमेंबर यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन आपसे बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्लेंटिफ साइड, एक्सप्लेन करो। सो प्लीज रिमेंबर ये जो क्वेश्चन है ये आपका केस लॉस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक इस पे भी आप एक अच्छा सा मेंस का क्वेश्चन तैयार करो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 16 क्लॉज सी में दो टर्म यूज हो रहे हैं, readiness and willingness। So first of all try to explain these two words, what is the meaning of these two words, and then try to connect these two words with the case laws, then you will give a good answer in that regard। So this was the seventh question which I am referring here। Now come to the another group of sections like from section 26 to section 35, but I am not taking all these sections because rectification is generally not asked under section 26, but yes recession is asked। तो मीन्स टू से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा जो मोर इम्पोर्टेंट होगा इन दोनों कॉन्सेप्ट में वो रेसेशन होता है कि रेसेशन मीन्स होता क्या है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स रेसेशन की रेमेडी मिलेगी एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स रेसेशन की रेमेडी कोर्ट नहीं देगा। तो एक तो आप कैटेगरी इस क्वेश्चन पे बनाओगे कि व्हेन द कोर्ट विल ग्रांट द रेमेडी ऑफ रेसेशन मीन्स टू से end the contract, and when the court will refuse to grant you the remedy of recession। और सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो बनता है कि आप डिफरेंशिएट करा दो the remedy of recession, the remedy of rectification and another remedy of cancellation। आप इन तीनों रेमेडीज का डिस्टिंग्विश करने का कैपेसिटी आप में होना चाहिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेमेडी ऑफ रेसेशन, distinguish this remedy of recession with the remedy of rectification। It might be possible they may ask you distinguish between the remedy of recession as well as the remedy of cancellation। Getting my point? So this may be another question which you can prefer for your practice in the mains। Now another question which I am saying about that declaratory decree, it is always been in the top priority of the question paper। declaratory decree सारे में पूछा जाता है, so you should go through this, what is the ambit and extent of the declaratory decree। I'm using this question, this is not, there is no stat jacket formula actually, but I am preferring those questions which are repeatedly been asked। तो ये declaratory decree में जो action है इसका scope क्या है, क्या कैपेसिटी है इसकी, एंड देन क्वेश्चन कैन अ डिक्लेरेटरी एक्शन बी ग्रांटेड आउटसाइड ऑफ द एक्ट और नॉट। सो इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि क्या डिक्लेरेशन की जो रेमेडी है वो आपको सिर्फ एसआरए में मिली हुई है या कोई एनी अदर लॉ भी है इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें आप डिक्लेरेटरी डिक्री की रेमेडी को गेन कर सकते हो। सो दिस मे बी द क्वेश्चन। Now next and the last question which I am referring here, that is from injunction। As I always say the student that SRA आपने पढ़ा है, अगर आपने specific relief पढ़ा है then you should also try to understand the remedy of injunction। The remedy of injunction means to say preventive relief which is included in the part 3rd of SRA। यहाँ पर आपसे वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट एक कन्फाइंड अगर मैं इसको बोलूँ इंजंक्शन पर तो आपका एक बेसिक क्वेश्चन तो यही होता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेमेडी ऑफ इंजंक्शंस।
try to make a classification of injunctions, when the court will grant you the remedy of injunction and when the court will refuse. So please remember, यहाँ पर आपका section 38 as well as section 41 which needs to be studied together, because under section 35 of SRA you are given the remedy for permanent injunction, while the court is going to grant you the remedy of permanent injunction under section 38, while in other hand there is one section, that is section 41, which completely says that these are the circumstances when the court will refuse to grant you the remedy of injunction. So these are all the important questions which I have referred here, and I am hoping that by taking these instances you will start your practice of mains writing. It will obviously be very, very helpful for you that you should take these questions and then try to make a practice on these questions, and then you will try to find out कि yes obviously अगर ये questions हमने avoid कर दिए होते तो शायद you would not be in a good position of practicing mains answer. So hopefully I think that these questions will be very helpful for you. Try to make a good practice. All the very best. Thank you so much.